want to just briefly cut across to reactions coming in, and then I'll bring in Polami as well as Heminder, who are live with us from the ground. मैं केंद्रीय नेतृत्व पे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, मैं सभी का आभार मानता हूं, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। तो मोहन जी, शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से अभी केवल नेता का चुनाव हुआ है और मोहन यादव जी अभी विधायक दल के नेता चुने गए। बधाई उनको, बहुत सारी बधाई, बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी, और सब मिलके काम करेंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? प्राथमिकताएं विकास, ये अभी तो मुख्यमंत्री जी का हुआ है, मोहन यादव जी अपने विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उनको बधाई, उनको शुभकामनाएं। तो आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है फिर? अभी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, तो आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी राष्ट्रीय सचिव, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो हरियाणा के सीएम है, जो आज यहाँ मेन ऑब्जर्वर बन के आए थे। उनके साथ 2 ऑब्जर्वर भी थे। मनोहर लाल जी, किस ढंग से ये चयन हुआ, कौन प्रस्तावक थे, और ये नाम अचानक जो चर्चा में भी नहीं था? देखिए, ये सारा विषय प्रदेश की जो एक टीम होती है और विधायक दल के जो प्रमुख लोग होते हैं वो सब बैठ करके विचार करते हैं, एक एक नाम पर विचार करते हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के उस पर मोहर लगती है, तब जा करके ये सारी चीज़ें होती है। प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्वयं इच्छा प्रकट की कि इस नाम का प्रस्तावना मैं करूंगा। उन्होंने प्रस्तावना की और बाकी जो प्रमुख 9-10 लोग हैं उन्होंने उसका समर्थन किया, अनुमोदन किया, और उसके बाद पूरे विधायक दल ने उसका समर्थन किया। अचानक ये नाम कोई चर्चा में नहीं, ना राजनीति, ये विषय जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं ये उनकी आपसी समझ होती है। ये इस विषय में हमारा पर्यवेक्षक के नाते कोई रोल नहीं होता। पर्यवेक्षक का तो ये है सब मिलकर के जिसका भी चयन करे मिलकर चयन कर ले। आलाकमान की क्या भूमिका थी इसमें? इसमें जब ये नाम कोई जाता है तो उसके ऊपर वहाँ के लोग चर्चा करते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं, उन्होंने मोहर लगाई और घोषणा हो गई। तो कैसे रहेंगे आगे की 2024 की राजनीति को देखते हुए मोहन यादव जी? देखिए, निश्चित रूप से जो मुझे जानकारी ली है, और वो 3 बार के विधायक हैं और संगठन से जुड़े हुए पुराने व्यक्ति हैं। उन्होंने संघ में, उन्होंने विद्यार्थी परिषद में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक लंबा काम किया है। मुझे लगता है कि इस प्रदेश को आगे लेकर के बढ़ेंगे। Central observer Manohar Lal Khattar there saying that this was a decision that was thought through and they considered several factors before going ahead and choosing Mohan Yadav. Polami Saha and Heminder Sharma are live with us. They were, of course, on ground when the news broke. Polami, you were taken aback. I remember we were live on the broadcast. You did say that this came as a huge surprise. And I sensed that among BJP supporters as well. Many of them were saying they want the return of Mamaji. Some were backing, saying we want an OBC face, we want the likes of Prahlad Patel. Nobody saw this coming of Mohan Yadav being named.
Absolutely nobody saw this coming. You know, we saw the faces over here as Heminder, my colleague, broke that news on India Today that Mohan Yadav is going to be the next Chief Minister of Madhya Pradesh. The faces around, there was suddenly pin drop silence. You know, there was a lot of noise in the air. There was a lot of dhol. There was a lot of sloganeering that was happening. And suddenly there was pin drop silence, with many probably asking who as the name was announced. And then, of course, sort of recovering from the shock of it, to then come back and say, oh, the higher education minister of Madhya Pradesh has just been anointed the next chief minister of the state. He's CM designate now. Clearly, there was a surprise element as far as the Bharatiya Janata Party was concerned. This is something that we have been adding as a disclaimer, Akshata, to all of the lists that we've been putting out, be it a Chhattisgarh or Madhya Pradesh or even Rajasthan now, a disclaimer saying, at the end of the day, we still don't know what the party is thinking, because it could still spring a surprise. Manohar Lal Khattar himself was a surprise when he was announced as the Chief Minister of the state of Haryana a few years ago. Correct. And then, of course, now this name, Pushkar Dhami, Bhupendra Patel, many such names, you know, that he can Akshata, think if I of. may, Yogi Adityanath, of course, the biggest surprise. Once again, because it's gone exactly the way it went in Gujarat. And I remember, you know, you were reporting and I was anchoring. Will you once again take us through on how Bhupendra Yadav Patel's name was announced in a very similar fashion, exactly what happened today? It's one of those anecdotes that has gone down in history, and a lot of us reporters, you know, were recounting that episode, saying this is literally what happens, and trust this to happen when we, of course, report out of a Madhya Pradesh or a Rajasthan. We've been speculating so much, it amounts to nothing, because this is the sort of surprise. Bhupendra Patel did not see it coming. Bhupendra Patel was sitting in the last row of the conference hall, completely oblivious to the proceedings, did not even see this happening. You know, he was very busy on his phone and, you know, just basically oblivious. And Narendra Tomar at that time was a central observer in Gujarat, and he gave a 45-minute long speech because it was still being finalized, is what we're being told. And suddenly he announced the name, Bhupendra Patel. Did not hear it, he was oblivious to it. And then someone turned around and said, "Sir, aap neta ban gaye." And he said, "Main to neta hoon." And then the person told him, "Sir, aap Vidhayak Dal ke neta ban gaye." And that's when Bhupendra Patel realized the cameras were going all over the room, trying to figure where is Bhupendra Patel, who is this gentleman whose name has been announced. Suddenly we zeroed in on the last row, and Bhupendra Patel had stood up, white shirt, black trousers, flashing the victory sign. And so, you know, from the story you're telling us, I think our viewers can forgive us if we didn't guess the name of Mohan Yadav before the announcement, because clearly even those within the BJP have absolutely no clue.